Today I have to read how many types of crystalline solid on the basis of chemical bond present among the particles. Before read the type of crystalline solid on the basis of bonds among the constituent particles of crystalline solid, we have to read about chemical bond. So, thank you Amit ji. I tell you about chemical bond. Bond, it is a restriction. You see a cow tied with a rope with fixed pole. Can't move away from the pole over rope because it bind C with pole. Just we are bonded in our society with casteism, education, capital, etc. We have it if we buy land or other property. Make a bond means restriction. After that, requirement is failed. Similarly, these all bonds, if you take any policy of LIC, you gave a bond paper in which it is written that what is the amount of policy, beginning of policy date and maturity date. Also explained, also declare how much money you get after maturity. When maturity is completed, you submit LIC bond in LIC office, you get the maturity capital according to it. But we have read about chemical bond. The definition is simple. Minimum force required to combined atoms present in a molecule is called chemical bond. Molecules may be elements or compound. For example, we have require life air oxygen. Formula of oxygen is O2. Here two atoms of oxygen chemically combined with each other, then we get oxygen. Without oxygen, our main switch be failed, stopped, and we or all living beings can die. Similarly, water is life. Water is fulfill our requirement for drinking, washing, bathing, irrigation, etc. It is available when chemical bond is available between hydrogen and oxygen atom. In water, two hydrogen atom attached with one oxygen atom. Then we get water. Without chemical bond, no water, not oxygen is available. Neither it, no one essential chemical substance we get without chemical bond. This is the importance of chemical bond in our life. Without chemical bond, we can't get
any required materials like sugar, milk, water, air, book, cloth, etc. Now, we have to read how many types of chemical bond. If we have provided to give answer in one sentence, then we write minimum force required to combine atoms present in a molecule is called chemical bond. These are of three types. First, electrovalent or ionic bond. Second, covalent or network bond. Third, coordinate bond. This is the short question. What is chemical bond and how many types of it? I repeat it completely. The chemical bond is defined as the minimum force required to combine atoms present in a molecule. Molecule may be elements, may be of elements or compounds, is called chemical bond. These are of three types: electrovalent, covalent and coordinate bond. Now in detail we read about what is electrovalent, what is covalent, what is dative bond. About electrovalent, definition is chemical bond formed by the complete transfer of valence electron. Thank you, Ashish. Acharya sir, good evening. Chemical bond formed by the complete transfer of valence electron is called electrovalent bond. It is also called ionic bond because we know that due to complete transfer of valence electron, ion get formed. If atom releases valence electron, cation is formed. If atom gain valence electron, anion is formed. Both are in opposite charge manner, so they attract to other and bond is formed, known as electrovalent or ionic bond. For example, NaCl, MgO, CaO, CaCO3, Na, HCO3, Na, 2CO3, etc. are the example of electrovalent compound. Here a new word come forward, valence electron. In class 11, in the chapter of atomic structure, we read about valence electron and core electron. We also read electronic configuration according to Bohr-Waring scheme of Bohr principle, Hounsfield, etc. The definition of valence electron is number of valence electron present in the outermost shell of an atom is called valence electron. The magnitude, the amount of valence electron may be from 1 to 8. And valence electron is always capable to take part in the formation of chemical bond. Core electron accept valence electron, accept electrons present in the outermost shell. Total number of electrons in any atom is called core electron, which does not take part in the formation of chemical bond. This is the definition of electrovalent. Second, covalent bond. The chemical bond. Thank you अमित जी. आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें. थैंक यू प्रिंस जगतपुर जी. आप अपने टीम में इस क्लास को शेयर कर दें प्रतिदिन सुबह 7 बजे हिंदी मीडियम वाले के लिए और शाम में 5 बजे इंग्लिश मीडियम वाले के लिए. जो 12 में छात्र आपके आसपास हैं, आपके लिंक में जो भी हैं उनको टैग कर दें, शेयर कर दें. थैंक यू. कोवेलेंट बॉन्ड.
The chemical bond formed by the sharing of valence electron is called covalent bond. We know also carbon makes only covalent bond. For example, CH4, C2H5, C6H6, CO2, etc. are the example of covalent compound. Third, coordinate bond. The chemical bond formed by the sharing of lone pair of electron is called coordinate bond. It is represented by ray or arrow-headed line segment. This is the complete question. What is chemical bond and how many types of it with example. Also repeat it. The minimum force required to combine atoms present in a molecule is called chemical bond. These are of three types. Electrovalent, the chemical bond formed by the complete transfer of valence electron. Second, covalent bond, the chemical bond formed by the sharing of valence electron. Third. थैंक यू राजेश जी, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, मैसेज करेंगे आप कहाँ रहते हैं, और अपने दोस्तों के टीम में शेयर कर दीजिए इस क्लास को। प्रतिदिन शाम में 5 बजे इंग्लिश मीडियम वाले का और सुबह 7 बजे हिंदी मीडियम वाले का क्लास होता है। थैंक यू राजेश, आप तो पुराने छात्र हैं। आपके लिंक में जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं या 12 के किसी बच्चे से कंसल्ट है, उनको मैसेज दे देंगे और शेयर कर दीजिए। सेकेंड था covalent bond, the chemical bond formed by the sharing of valence electron is called covalent bond, present in CO2, CO, C2H4, C2H6, CH4, C6H6, etc. Third, coordinate bond, the chemical bond formed by the sharing of lone pair of electron is called coordinate bond. एग्जाम्पल में CO है, NH4Cl है, etc. ये था कोऑर्डिनेट बॉन्ड. Here a new word come forward named lone pair of electron. You know about this, such pair of electron which does not take part in the formation of chemical bond is called lone pair of electron. अब इसके बाद जो क्वेश्चन राइज होता है वह होता है कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है. वी वॉच इन आवर सोसाइटी सो मेनी पीपल्स आर लिविंग, दे हैव डिफरेंट ऑक्यूपेशन एंड इन द मॉर्निंग all are raised and ready to perform their occupation without any restriction, without any talking, without any order. All have only one goal, to become equal to their neighbors. If a person neighbors has motorcycle and he has cycle, he earn money regularly with effort to have a motorcycle. Means all wants to reach among 118 elements except 6 helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. 112 elements always want to reach along with their neighbor, nearest inert element except hydrogen. The nearest inert gas of hydrogen is helium, which has only 2 electrons. This is why hydrogen becomes stable by gaining 2 electrons in its outermost shell. But except hydrogen and 6 inert gas element, all elements wants to 8 electrons in their outermost shell. For this they make chemical bond, and chemical bond is necessary
for our daily requirement materials. Any materials required to our survive is formed by chemical bond. Without chemical bond, we can't survive. We can't get any required material. This is what is chemical bond. How many types of it? Thank you, Ajay Kumar ji. ये था केमिकल बॉन्ड क्या है, कितने प्रकार का होता है और ये क्यों बनता है, इसका हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। अब जो 12 का सिलेबस है, ये तो 11 में एक चैप्टर ही है कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग का, और जो भी केसीसी नोगुचिया कौशल केमिस्ट्री नोगुचिया में पढ़े होंगे, निश्चित रूप से उनके कॉपी में 1 महीना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चला हुआ है और पूरा थॉट जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखा हुआ है। कृपया वे अपनी कॉपी को खोल कर रिवाइज कर लेंगे क्योंकि बगैर केमिकल बॉन्ड का टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट अमॉन्ग इट्स कंस्टिट्यूएंट समझ पाना संभव नहीं है। अब मैं आता हूँ आपके 12 के सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स between the constituent particles between the constituent of any crystalline solid. थैंक यू राजेश जी, आप लिखेंगे, मैसेज करिएगा हमको कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब तो बहुत पुराने छात्र हैं, बहुत प्रिय छात्र हैं, आप वॉच कर रहे हैं मेरे क्लास को, मैसेज भी कर रहे हैं, धन्यवाद है आपको। एस जरूर होगा राजेश जी, जब तक आप रहेंगे तब तक कॉपी में रहे कि नहीं रहे, लेकिन आपके मन मस्तिष्क में मेरा कैसेट जरूर लोड होगा, और जब भी कॉपी कभी खुलेगी तो मेरी आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी। ये तो मैं खुले क्लास में आपको बताया था। थैंक यू, धन्यवाद आपको इसके लिए कि 4 साल बाद भी आपकी कॉपी में मैं जो बोल रहा हूँ वह लिखा हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैंने कहा था कि जब तक आप पढ़ने से मतलब रखिएगा, मेरे कॉपी को दान में नहीं दीजिएगा, अपने पास रखिएगा, वो आपको हमेशा काम देते रहेगा। तो बातें थी, हमें जो क्वेश्चन आज पढ़ना है वह है हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्ड present between the particles. If we have give this answer of this question in one sentence, we write there are 4 types of crystalline solid on the basis of bond. Thank you, बीटेक कर रहे हैं, अच्छी बात है। क्या ब्रांच है आपका, फैकल्टी क्या लिए हुए हैं, कौन सा ट्रेड है? राजेश जी ट्रेड भी लिखेंगे, भोपाल में, अच्छी बात है, अभी घर पे आएंगे भोपाल में। ये एक सेंटेंस में हम जवाब दे सकते हैं। 3rd ईयर स्टूडेंट, थैंक यू। There are 4 types of crystalline solid on the basis of केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट अमॉन्ग देयर कंस्टिट्यूएंट्स। अब हम आते हैं कुछ 4 में से पहला इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड होता है। थैंक यू, घर पर हैं, तब तो लॉकडाउन ही है, चलिए अच्छा है। नोगुचिया तरफ अगर घूमने आइएगा, अभी तो नोगुचिया में कर्फ्यू लगा हुआ है, जब नॉर्मल होगा स्थिति आइएगा तो ज़रूर मिलिएगा। इसी आशा के साथ आपको मेरे हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद। ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, बहुत अच्छा है, कोई भी बैठा हुआ नहीं है, इसमें कंप्लीट होगा, आपको निश्चित रूप से जॉब मिल जाएगी। अच्छा ट्रेड आपने लिया है। अब यदि हमें कहा जाए कि इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड क्या होता है, हम बोलेंगे द मोड ऑफ सॉलिड
whose constituent particles attached combined with electrovalent bond. The crystalline solid where electrovalent bond is available between the constituent particles, may be atom, molecules or radicals, is called electrovalent solid. अब बातें आएगा कि इलेक्ट्रोवेलेंट सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी होता है. व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट सॉलिड? वी नो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड is also called ionic bond, so electrovalent solid is also called ionic solid. There are following properties, following characteristics of electrovalent solid or electrovalent compound. First, generally they are found in solid state. Second, they have higher MP and BP because electrovalent bond is available among them, among their constituents, and it is the strongest bond, so it has higher MP and PP. They have higher density because constituent particles are attached at minimum distance. Third, it is bad conductor in solid state but good conductor of electricity in fused and solution state. After that, they are non-volatile. They are colorless. The rate of reaction occurring between them is very fast. These are the characteristics of electrovalent solid or electrovalent compound. Now I repeat this question because it is a separate question. In previous year 2018 and 17, this question come forward for 2 marks. What is? Write 2 properties of electrovalent solid. Question होगा, write the characteristics of electrovalent solid or crystalline solid. There are following characteristics of crystalline solid. First, generally they are found in solid state. Second, they have higher MP and BP due to presence of electrovalent bond. They have higher density because their constituent particles are attached at minimum distance. After that, they are not volatile. They are soluble into water. They are bad conductor of electricity in solid state. But good evening, Pathak sir. They are bad conductor of electricity in solid state, but good conductor of electricity in fused or in solution state. After that, the rate of reaction occurring between the electrovalent solid, electrovalent compound is very fast. This is the today's complete question. What is electrovalent solid and what is property of it? The solid formed by electrovalent bond is called electrovalent solid. Property, generally they are found in solid state. Second, they have higher MP and BP due to presence of electrovalent bond. They have higher density because their constituent particles are attached at minimum distance. They are soluble into water. They are bad conductor of electricity in solid state, but good conductor of electricity in fused or solution state. They are not volatile. They are colorless. The reaction occurring between them is very fast. This is the today's thought. Next, second type, covalent solid, is quietly different from electrovalent.
So this type of solid we read tomorrow at your time. अंततः मैं तमाम दर्शकों से, जो भी मेरे लाइव क्लास को देख रहे हैं, से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आपके संपर्क में जो भी 12 के बच्चे होंगे और उनका साइंस है, चाहे बायोलॉजी हो कि मैथ हो, केमिस्ट्री सब्जी के टमाटर की तरह रहता है, दोनों को रहता है, बायोलॉजी वाले को भी और मैथ वाले को भी। जो भी बच्चे आपके संपर्क में होंगे, आपके कांटेक्ट लिस्ट में होंगे, उनको शेयर कर देंगे, उनको मैसेज दे देंगे। प्रतिदिन KCC नोगोचिया कौशल केमिस्ट्री क्लासेस नोगोचिया में ऑनलाइन फेसबुक पर हिंदी वाले के लिए, हिंदी मीडियम वाले के लिए सुबह 7 बजे और अंग्रेजी मीडियम वाले के लिए शाम में 5 बजे क्लास होती है। इस लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान भी घर बैठे बच्चे लाभ उठा सकते हैं, बेधड़क, विदाउट एनी कॉस्ट, और घर में बैठकर। इससे बढ़ के और क्या हो सकती है। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू राजेश जी, आपके मैसेज के लिए धन्यवाद।